Hey YouTube fam, welcome to my YouTube channel and thanks for clicking on this video. हमने कुछ प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बहुत सारे इम्पोर्टेंट MCQs डिस्कस किए एंड इन दोस MCQs जब हम वो सॉल्व कर रहे थे we also saw the strategy to solve those multiple choice question and also वो जो multiple choice question के based concepts है in the entire chapter वो भी हमने डिस्कस किए थे which will help us to solve those MCQs in a better way. Now I am overwhelmed by your response and once again I am here continuing that series of lecture. आज भी हम कुछ ऐसे multiple choice question देखेंगे which are figure based or you can also consider it as a diagram based series of multiple choice question. और एक important concept है that is of active and passive midriasis वो भी हम आज के लेक्चर में डिस्कस कर रहे होंगे. So without wasting any time, let us start with our first MCQ. Identify the neurotransmitter released in the following figure. Our options are acetylcholine and noradrenaline. Option B, noradrenaline and acetylcholine. Option C, acetylcholine and acetylcholine. And our option D is none of the above. Now, जब भी हम कोई भी फिगर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जहां पे आपको ये बोला गया है कि आइडेंटिफाई द न्यूरोट्रांसमीटर दैट इज रिलीज्ड इन द फॉलोइंग फिगर, सबसे पहले हमारा काम ये होना चाहिए टू आइडेंटिफाई वेदर दैट फिगर इज हैविंग सिंपैथेटिक फाइबर और पैरासिम्पैथेटिक फाइबर. बिकॉज हमने जब बेसिक वीडियो लेक्चर पे फोकस किया था we had classified our autonomic nervous system into two main classifications. The very first one was sympathetic nervous system and the second one was parasympathetic nervous system. हमने ये भी देखा था कि how to identify sympathetic fibers and parasympathetic fibers. So first of all, we will revise how to identify those fibers. So as you can see on your screen, this is our parasympathetic fiber and ये जो आपको दिख रहा है that is our sympathetic nervous system के fibers. Let us consider this as our ganglia. This is our neuron number 1 and this is our neuron number 2. But हम biologist को चीजों को complicated करना बहुत अच्छा लगता है. So we will have a specialized term that is denoting our neuron number 1 and neuron number 2. As you can see कि ये जो neuron number 1 है it is present behind our ganglia, hence this neuron number 1 is known as preganglionic fiber. ये जो neuron number 2 है that is present after the ganglia, hence it is known as postganglionic fiber. Now the next concept is how to identify पैरासिम्पैथेटिक वाला फाइबर एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का फाइबर. सो आई जस्ट वांट यू टू फोकस ऑन प्रीगैंग्लियोनिक फाइबर ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. फ्रॉम दिस इट इज क्वाइट एविडेंट जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के प्रीगैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं दे आर लॉन्ग एंड जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के प्रीगैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं दे आर शॉर्ट. नाउ लेट अस कंपेयर द पोस्टगैंग्लियोनिक फाइबर्स एज वेल. इफ यू कैन सी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के पोस्टगैंग्लियोनिक फाइबर्स दे आर शॉर्ट एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के पोस्टगैंग्लियोनिक फाइबर्स दे आर लॉन्ग. So let us apply this concept in our MCQ question. So यहाँ पे as you can see this is our ganglia and ganglia के पहले this is our preganglionic fiber. Preganglionic fiber का जो size है और we can say जो length है that is short and जो postganglionic fiber का जो length है that is long. So according to our concept अगर प्रीगैंग्लियोनिक फाइबर शॉर्टर इन लेंथ होगा एंड पोस्टगैंग्लियोनिक फाइबर लॉन्गर इन लेंथ होगा, दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर फाइबर इज ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम.
सो यहाँ पे दिस पर्टिकुलर फिगर इज ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का फाइबर. नाउ जब हम ये पढ़ रहे थे, वी ऑल्सो सॉ कि व्हाट डू वी मीन बाय न्यूरोट्रांसमीटर. सिंपली जस्ट रिमेंबर कि न्यूरोट्रांसमीटर्स आर नथिंग बट they are certain chemicals which are released from the nerve ending. वो nerve ending से जब न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, it will act on a specific receptor and ultimately after acting on those specific receptor it will show its action. वहाँ पे हमने एक जनरल रूल पढ़ा था कि जितने भी हमारे प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं, they all will release acetylcholine as their main neurotransmitter irrespective of parasympathetic nervous system or sympathetic nervous system. So हमारा जो पहला क्वेश्चन मार्क है that is प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स में से कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा. So यहाँ पे there will be release of acetylcholine. Now the question is पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स में से कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा. जस्ट रिमेंबर वन थिंग, इन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो मेजॉरिटी हमारा जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है दैट इज एसिटाइलकोलिन, एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो मेजॉरिटी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है दैट इज नॉरएपिनेफ्रिन. एंड ऑल्सो रिमेंबर कि ये जो नॉरएपिनेफ्रिन है इट इज ऑल्सो नोन एज नॉरएड्रेनालिन. सो जैसा कि हमने ये फिगर में देखा था, दिस पर्टिकुलर फिगर इज ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम फाइबर. सो यहाँ पे जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स होंगे दे विल रिलीज नॉरएपिनेफ्रिन और वी कैन से नॉरएड्रेनालिन एज इट्स मेन न्यूरोट्रांसमीटर. सो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे एसिटाइलकोलिन आएगा, एंड यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन मार्क है वहां पे नॉरएड्रेनालिन आएगा. सो जस्ट आइडेंटिफाई कि हमारे क्वेश्चन में ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है. द आंसर इज यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. यहाँ पे जो पहला एसिटाइलकोलिन है ये यहाँ का क्वेश्चन मार्क को डिनोट करता है, and this noradrenaline is representing the release of neurotransmitter by this particular question mark. Always remember, एक जनरल रूल आपको मैं बता देता हूं कि जितने भी हमारे प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं all will release acetylcholine. Just remember that. Moving on to our next question. Once again हमें ये क्वेश्चन में दिया है कि identify the neurotransmitter that is released in the following figure. Our options are acetylcholine and acetylcholine. Our option number B is acetylcholine and noradrenaline. Option number C is noradrenaline and noradrenaline. And our option number D is noradrenaline and acetylcholine. Once again हम वही same strategy use करने वाले हैं, that is to identify whether these fibers are of sympathetic nervous system or of parasympathetic nervous system. So let's take a look. यहाँ पे we can see जो हमारे प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स है they are long, and जो हमारे पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स है they are short. and अभी हमने पढ़ा था कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो हमारे प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं दे आर लॉन्ग, एंड जो हमारे पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं दे आर शॉर्ट. सो श्योरली ये जो फिगर है इट इज रिप्रेजेंटिंग अवर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का फाइबर. वंस अगेन जो हमने रूल पढ़ा था कि जितने भी हमारे प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं दे विल रिलीज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर, and the name of that neurotransmitter is acetylcholine. So यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे there will be release of acetylcholine. Now let's come back to our post ganglionic fiber. Post ganglionic fiber में this is representing our parasympathetic nervous system, and once again I told you कि जो parasympathetic nervous system होते हैं वहां पे जो मेन न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है फ्रॉम द पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर इज एसिटाइलकोलिन.
सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में the answer will be acetylcholine, and once again there will be release of acetylcholine from our postganglionic fiber. So in this particular question our option number A is correct, which says acetylcholine will be released at this point, and once again acetylcholine will be released from postganglionic fibers at this particular point. Moving on to our next question. Once again, we need to identify the neurotransmitter that is released in the following figure. Now, it is very simple. यहाँ पे जो प्रीगैंग्लियोनिक फाइबर है that is short, and जो हमारा postganglionic fiber है that is long. That means this figure is of sympathetic nervous system का fiber. But wait, यहाँ पे हमें एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है कि यहाँ से जो भी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा दैट न्यूरोट्रांसमीटर विल बी एक्टिंग अपॉन ऑन अवर स्वेट ग्लैंड. एंड रिमेंबर, जो हमारे स्वेट ग्लैंड में सिंपैथेटिक आउटफ्लो होता है दैट सिंपैथेटिक आउटफ्लो फ्रॉम द पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स ऑफ अवर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम विल रिलीज एसिटाइलकोलिन. सो यहाँ पे जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स है वंस अगेन दे आर गोइंग टू रिलीज एसिटाइलकोलिन, एंड जो हमारा पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर है दैट इज वंस अगेन गोइंग टू रिलीज एसिटाइलकोलिन. व्हाई? बिकॉज जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का फाइबर जाता है टू द स्वेट ग्लैंड दैट इज रिलीजिंग अ मेन न्यूरोट्रांसमीटर दैट इज एसिटाइलकोलिन. And this you can remember as an exception. हमने previously भी डिस्कस किया था when we were discussing about the sympathetic nervous system के fibers कि जो sympathetic fiber sweat gland को सप्लाई करते हैं they are releasing its main neurotransmitter that is acetylcholine. Now one more thing, ये जो adrenal medulla है वहां पे भी जो हमारे sympathetic fibers है they are releasing acetylcholine, and जब भी ये acetylcholine adrenal medulla पे काम करेगा it will release a very important chemical, and the name of that chemical is adrenaline. But remember, ये जो adrenaline है वो डायरेक्टली हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, एंड जहां पर भी एड्रीनालिन को अपने एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स दिखेंगे it will act on those adrenergic receptor. जस्ट टू समराइज, एड्रीनालिन कौन से एड्रीनर्जिक रिसेप्टर पे काम करता है? रिमेंबर, अवर एड्रीनालिन इज वर्किंग ऑन ऑल अवर एड्रीनर्जिक रिसेप्टर टू नेम अल्फा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर, अल्फा 2 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर, बीटा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर, बीटा 2 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर, and also our adrenaline can act on beta 3 adrenergic receptor. Remember that. Now, जो हमारी मोटर नर्व जाती है that is releasing the main neurotransmitter that is acetylcholine, and it is mainly supplying to our skeletal muscle. So you see कि अगर आपको ये बेसिक पता होगा so you can immediately strike those questions in a better way. So ये पर्टिकुलर डायग्राम याद रखना बहुत जरूरी है. Now एक कॉन्सेप्ट आता है that is of active midriasis and passive midriasis. So let's see this particular concept. हमने देखा था कि जो हमारी आइरिस की मसल्स होती हैं तो उस आइरिस वाले मसल्स में there are two important muscles. As you can see कि यहाँ पे जो सर्कुलर मसल्स होती हैं the circular muscles they are known as sphincter muscle, and ये जो रेडियल मसल्स हमें दिख रही है they are known as radial muscles, और उसका दूसरा नाम है dilator pupillae. Now जब हमने एड्रीनर्जिक रिसेप्टर के बारे में डिस्कस किया था कि हमारे आईज में कौन से एड्रीनर्जिक रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, तब हमने देखा था कि जो हमारे रेडियल मसल्स होते हैं those radial muscle are having alpha 1 adrenergic receptor, and sphincter muscle के पास एक important muscarinic receptor होता है
that is M3 receptor. Now just to give you a brief information, what do we mean by muscarinic receptor? So जैसा कि हमने sympathetic nervous system में देखा था कि we have adrenergic receptor and adrenergic receptor को हमने दो classification में divide किया था. The very first one was alpha adrenergic receptor and the second one is known as beta adrenergic receptor. Similarly, जो हमारा parasympathetic वाला nervous system होता है जहाँ पे acetylcholine release होता है, that acetylcholine can act on two main receptors. One is known as muscarinic receptor and the second one is known as nicotinic receptor. Now, ये जो muscarinic receptor होते हैं, we again classify those muscarinic receptor into 5 main subdivisions. Mainly we have M1, M2, M3 receptors and we also have M4 and M5 muscarinic receptor. So for now, just remember कि जो हमारे आँखों में muscarinic receptor होता है, that is of mainly sphincter muscles में जो muscarinic receptor present होता है, that is M3 receptor. जब हम लोग cholinergic system पढ़ेंगे, at that time we will go into details of all those muscarinic as well as we will go into the details of nicotinic receptor. Now, जब हमने ये डिस्कस किया था कि रेडियल मसल इज हैविंग अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, हमने वहां पे देखा था कि व्हेन वी स्टिम्युलेट दिस अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, जो हमारे प्यूपिल है, दे विल इंक्रीज इट्स डायामीटर and this increase in the size, or we can say the diameter of a pupil, is known as midriasis. So let's see its definition. Midriasis is nothing but whenever the size of the pupil increases, it is known as midriasis, and mainly it is because of alpha 1 adrenergic receptor stimulation which is present on our radial muscle. Now यहाँ पे जो हमारे स्फिंक्टर मसल्स होते हैं, जब भी हम M3 रिसेप्टर को स्टिम्युलेट करते हैं, इट विल कॉन्स्ट्रिक्ट अवर प्यूपिल, यानी कि जो हमारी प्यूपिल की साइज है दैट विल डिक्रीज, एंड दिस पर्टिकुलर फिनोमेनन इज नोन एज मियोसिस. सो व्हेनेवर द साइज ऑफ द प्यूपिल डिक्रीजेस, दैट पर्टिकुलर फिनोमेनन इज नोन एज मियोसिस. एज यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम, here you can see कि जो pupil की size है, or we can say the diameter of a pupil has reduced, and ये phenomenon को हम बोलते हैं meiosis. In the second figure we can see कि ये जो pupil की size है it has increased, यानी कि उसका diameter increase हुआ है, and this particular phenomenon is known as midriasis. Now what do we mean by active and passive midriasis? Let's first talk about active midriasis. As I told you कि जो भी मेरे drugs होंगे, if it is acting on alpha 1 adrenergic receptor, it will dilate our pupil. So ऐसे drugs जो directly alpha 1 adrenergic receptor को stimulate करते हैं, and those drugs produce midriasis after working on alpha 1 adrenergic receptor directly, वैसे हम फिनोमेनन को बोलते हैं एक्टिव midriasis. So let's read the definition of active midriasis. It states that the dilation of the pupil due to the direct stimulation of our dilator pupillae, and mainly it is because of alpha 1 adrenergic receptor action. Now let's further talk about active meiosis. Active meiosis is nothing but जो भी हमारे drugs होंगे which can directly stimulate our M3 receptor, that will produce after the stimulation decrease in the size of our pupil, and ऐसे जो drugs होते हैं which can directly work on our M3 receptor and decrease our diameter of our pupil, that particular phenomenon is known as active meiosis. So let's take a look in the definition of active meiosis.
It states that the constriction of the pupil by directly stimulating M3 receptor which is present on our sphincter pupillae. This particular phenomenon is known as active meiosis. Now let's take a look. What do we mean by passive midriasis? Now let's suppose in this particular figure हमें ये पता है कि यहाँ पे जो स्फिंक्टर मसल है we have M3 receptor and जो हमारे रेडियल मसल्स हैं we have alpha 1 adrenergic receptor. So suppose मेरे पास कोई ड्रग है which can bind to this M3 receptor and block the activity of M3 receptor. So the activity which is over dominating will be our radial muscle की activity, that is of alpha 1 adrenergic receptor. This particular phenomenon is known as passive midriasis. So let us take a look in the definition. It states that by blocking M3 receptor, there will be midriasis because of overactivity of our alpha 1 adrenergic receptor. So as you can see, why it is known as a passive. Active हम कब बोलते हैं? जब डायरेक्टली हम अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को स्टिम्युलेट करते हैं. पैसिव कब बोलेंगे? जब हम M3 को ब्लॉक कर देंगे एंड बिकॉज ऑफ दैट ब्लॉकेज ऑफ M3 रिसेप्टर देयर विल बी ओवर स्टिम्युलेशन, या फिर हम ऐसा समझ सकते हैं कि अल्फा 1 की जो एक्टिविटी है दैट विल ओवर पावर अवर M3 रिसेप्टर की एक्टिविटी. एंड हमें यह पता है कि जब अल्फा 1 को हम स्टिम्युलेट करते हैं देयर विल बी मिड्रियासिस. सो यहाँ पे इनडायरेक्टली हम मिड्रियासिस को प्रोड्यूस कर रहे हैं. दिस फिनोमेनन इज नोन एज पैसिव मिड्रियासिस. नाउ थेरोटिकली स्पीकिंग, व्हाट डू वी मीन बाय पैसिव मियोसिस? It is basically due to the blockage of alpha 1 adrenergic receptor. जब हम अल्फा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे, सो जो हमारी ओवर एक्टिविटी होगी दैट इज ऑफ M3 रिसेप्टर दैट विल प्रोड्यूस मियोसिस. नाउ थेरोटिकली ये पैसिव मियोसिस का यही डेफिनेशन है, बट जब हम प्रैक्टिकली देखते हैं इट इज नॉट दैट मच सिग्निफिकेंट. सो जस्ट रिमेंबर कि ये जो एक्टिव मियोसिस है, एक्टिव मिड्रियासिस है एंड पैसिव मिड्रियासिस है, दे आर सीन. एंड ये जो पैसिव मियोसिस है प्रैक्टिकली हमने इतना ज्यादा इस पे देखा नहीं गया है कि आफ्टर ब्लॉकिंग अवर अल्फा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर देयर विल बी सिग्निफिकेंट मियोसिस. सो रिमेंबर दैट. फिर हम लोग ने एक इंपॉर्टेंट ड्रग्स देखे थे which are our drug of choice for a specific condition. Our first condition is attention deficit hyperkinetic disorder, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में ADHD भी बोलते हैं. In this particular condition, जो हमारा ड्रग ऑफ चॉइस होता है that is methylphenidate. Second condition is narcolepsy. In case of narcolepsy, the drug of choice is modafinil or we can say R-modafinil. In case of anaphylactic shock, हमने इस पे बहुत ज़्यादा टाइम डिस्कस किया था in our previous video lecture कि in case of anaphylactic shock, the drug of choice is adrenaline. Why the adrenaline is the drug of choice in case of anaphylactic shock? बहुत easy है. Whenever there is a condition that is known as a shock, there will be reduction in the blood pressure. So हमारा मेन काम होगा कि blood pressure को elevate करना है. Now what happens in case of anaphylactic shock? The person is finding difficult to breathe. So our adrenaline is having beta 2 adrenergic receptor action. उससे क्या होगा? There will be bronchodilation and person can easily breathe. So adrenaline दो काम कर सकता है. The very first one is it can elevate our blood pressure, and second one, by creating bronchodilation, it can make breathing easy. So that is why adrenaline is a drug of choice in case of anaphylactic shock.
Remember that. Now, in case of cardiogenic shock along with oliguria, our dopamine is a drug of choice. Now, the question is, why dopamine is a drug of choice in case of cardiogenic shock along with oliguria? So remember, जो हमारा dopamine होता है, that is also having in the low dose dopaminergic activity. Dopaminergic activity by हमारा जो dopamine है, it can work on our D1 receptor, and D1 receptor ज़्यादा कहाँ पे present होते हैं? They are present on our renal blood vessel. So when dopamine is given in low dose, it can stimulate our D1 receptor, and D1 receptor के stimulation से it will create dilatation of our renal blood vessel. So ज़्यादा blood kidney में जाएगा, and जो low urine output की problem है, that can be solved. But wait, यहाँ पे लिखा है cardiogenic shock. That means हमें blood pressure को भी elevate करना है, and हमने previous video lecture में पढ़ा था कि our dopamine in high dose can also create a positive impact on our blood pressure. That means ये दो चीजें कर सकता है. Number one, in high dose our dopamine can stimulate our D1 receptor, and also it can stimulate our blood pressure. That is the main problem we have to deal with in our cardiogenic shock along with oliguria. So that is why dopamine is a drug of choice in case of cardiogenic shock along with oliguria. So that's it for today's video lecture. I hope ये particular video lecture में आपको कुछ सीखने मिला होगा. If yes, please consider subscribing to my YouTube channel. Press that bell icon, like this video and share it with your friends. See you in the next video. Take care. Bye bye.